Assalamu alaikum. Let's start with question number one. A bus travels at a constant speed. It stops for a short time. वो थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर दोबारा से एक हायर constant speed से travel करने जाती है. And now we have to draw a distance time graph for this bus journey. बस हम टाइम जीरो से हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, डिस्टेंस जीरो से भी शुरू कर सकते हैं. बट लेट्स स्टार्ट विद फॉर एग्जांपल वो 10 किलोमीटर से स्टार्ट करिए, ठीक है. और वो कांस्टेंट स्पीड से वो जा रही है. And then what it does it stops for a short time. So stop इसका मतलब है वो वेट कर रही है, लाइक पॉज पे है. तो थोड़े से टाइम के लिए उसने पॉज किया. If I make this correctly more neatly, it will be like this. तो उसने कहा शॉर्ट टाइम के लिए, तो आई थिंक दैट्स इनफ. उसके बाद हायर कांस्टेंट स्पीड, यानी हायर कांस्टेंट स्पीड. हायर मींस यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि वो स्टीपर स्लोप होगा, यानी आपका जो ग्रेडियंट है वो ज़्यादा होगा. इधर आपका ग्रेडियंट से उससे ज़्यादा होगा, यानी लेट्स से इट विल बी लाइक दिस. डेफिनेटली अब इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का ग्रेडियंट डिफरेंट है. सो दैट्स द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द बस जर्नी दैट यू विल बी ड्राइंग. स्टार्टिंग में कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्मली डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, फिर स्पीड, फिर स्टॉप कर गई कार बस, और फिर वो मजीद हायर कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रही है. The B part says lift elevator starts from rest at the ground floor of a building. यहाँ से वो शुरू हुआ है और स्पीड टाइम ग्राफ बनाया है उसने मोशन टू द लिफ्ट टू द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. यानी कि लिफ्ट का स्टार्ट यहाँ से हुआ, ग्राउंड फ्लोर पे गई, पॉज एंड देन द नेक्स्ट. सो व्हाट्स द क्वेश्चन? The question says use the graph to determine the distance from the ground floor to the top floor of the building. अब हमने distance find करना है and from the ground floor to the, so from the top from the ground floor to the top floor, and we have to find distance, and it's a speed time graph. So that means we have to find area under graph of this particular graph. So firstly what we are going to do is हमारे पास अगर हम लोग इनके मेजरमेंट्स देखें, इस सारे का हमने डिस्टेंस एरिया अंडर ग्राफ लेना है, ठीक है. तब वी कैन आइदर गो फॉर इट एज अ ट्रेपीजियम, या हम इसको एन होल ट्रेपीजियम लेके कर सकते हैं, या फिर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं टू थ्री पार्ट्स. वन विल बी दिस ट्रायंगल, देन दिस विल बी अनदर स्क्वायर or rectangle, and then another triangle. I personally like to go with the trapezium method. That's quicker, easier, and efficient. So we're going to use the formula of trapezium: half multiplied by the parallel side, the addition of or the sum of parallel sides. The parallel sides will be this one, like this line and this line. These two lines are the parallel. And then we are going to multiply it with h, the height. So let's find the a first. फर्स्टली ये हमारे पास जो एक लेंथ है वो है 25 प्लस, अब हम किस में प्लस करेंगे, अब ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास है 20, ये हमारे पास इसके मिडल में आ रहा है, दैट इज 5, और ये 7.5 बन जाएगा. तो दिस इज 7.5. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 20 माइनस 7.5, दैट विल बी 13.5. ओके, सो दैट्स 13.5. ये हमारे पास दोनों पैरेलल साइड्स आ गई. अब इनका हाइट, यानी कि वर्टिकल हाइट जो कि इतनी बन रही है, लेट्स सी ये 3 है, ये 3.1, 3.2, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 3.3. इसको हम 3.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब हम अगर इसको कैलकुलेटर में पुट इन करते हैं तो 25 प्लस 30.5, दैट इज 38.5 multiply by 3.3 divided by 2. I made some mistake, I think. It should not be 13.5. Here it should be 12.5. So again, another mistake over here. And then
तो यहाँ पर क्या होगा 12.5, और जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 61.875, जो कि राउंड ऑफ करके 62 मीटर्स आता है, एंड दैट विल बी द डिस्टेंस एंड द आंसर for part B. Question number 2 shows figure 1.1 shows the speed time graph for a car traveling along a straight road. The graph shows how the speed of the car changes as the car passes through a small town. यहाँ पे एंटर हुआ एक टाउन पे और यहाँ पे लीव कर गया. Calculate the distance between the start of the town and the end of the town. अब स्टार्ट से एंड तक का हमने टाउन को उसके डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, यानी कि अब हमें एरिया अंडर ग्राफ करना पड़ेगा. अब इसके लिए हमें ये एंटर टाउन हेयर से लेकर लीव टाउन हेयर तक का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. सो अगर ये वाला हम देखें तो ये हमारा यहाँ पर जाके मार्क होता है दिस पॉइंट, एंड देन अगर हम इसके नीचे जाएं तो हमारे एक ये पॉइंट बनता है और इसके नीचे ये पॉइंट बनता है. तो अगर हम उनकी रीडिंग्स को रीड करें, ये एक पूरा हमारे पास एक स्क्वायर बनता है लाइक दिस, जिसका हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पूरे स्क्वायर का, जो कि एरिया अंडर ग्राफ है. तो ये वाली लाइन जो बनती है ये हमारे पास 10, देन हमारे पास ये 11, ये 12, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 13. सिमिलरली यहाँ 10 है, ये 11, 12, 13, 14, इट्स 18, और ये हमारे पास 42 है. तो इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए ये वाली लेंथ, तो हमें 42 माइनस 18 करना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 24. तो यानी ये हमारे पास अगर हम लोग डिस्टेंस का इसका फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस एरिया अंडर ग्राफ का जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप पे है. तो इट्स गोइंग टू बी 24 मल्टीप्लाई बाय 13, दैट्स 312 meters, and that's it. That's the answer for this part. You just need to show 24, 13. You need to show these things on the you should also show 42 minus 18, that's 24, and that's it. And you should also write area under graph. This will give you 3 marks. For part B, the question is calculate the acceleration of the car between C and D. अब C और D के दरमियान हमने एक्सेलरेशन यानी निकालनी है. अब स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका मतलब है हमने इसका ग्रेडियंट निकालना है. To find its gradient, we can use any 2 points on this, and then we need to just find its color. Let's take D and C as the point. So if we go back, if I use a scale, I can see ये जो हमारे पास बन रहा है that's 51, 52, 3, 54, that's 54. Yes. और अगर हम लोग इस वाले को लेकर जाएं, इस पॉइंट को अगर हम लेते हैं, so that's 41. No, that's 42. Yes, it's 42, and that's 54. ये हमारे पास, ये तो हमारे पास x एक्सिस के आगे. y के लिए हमारे पास क्या है? We need to find that as well. That's 32. Or for C, that was 13. We just found out. This was 13. This was 31, not 32. क्योंकि 32 फिर ये होगा, फिर ये 33 है, फिर ये 34 है. Yes, it's 31. So हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं. अगर मैं C के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो C के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आएंगे 42, 13, और D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 54, 31. Now let's take the gradient. So we know that the gradient formula is y2 minus y1 over x2 minus x1, or you can also use rise over run and just take the difference of the x values. So let's do it. 31 minus 13 divided by 54 minus 42. We're going to get firstly it's going to be 18, and it's going to be 12, and 18 divided by 12 is 1.5 meter per second square. So that will be the answer for this part.
C says state how the graph shows that the deceleration of the car has the same numerical value as its acceleration. So basically they're saying that why the acceleration and deceleration of the car has the same exact value. That is because they have the same gradient. They have the same line of slope, they have the same gradient. That is why, or basically the same slope is due to the same changes. जितना change speed में equal times में आया था in the acceleration, उतना ही change speed में आया था in the deceleration. They have the same gradient. I think this will be the sufficient answer for this part. Question number 3, figure 1.1 and 1.2 shows speed time graph for two objects, each moving in a straight line. दोनों straight line में जा रहे हैं पर उनकी speed time थोड़ा सा different आ रहा है. Describe the motion of the object shown by the graph in figure 1.1. In the figure 1.1 हमारे पास जो motion of the object है वो indeed वो एक increase तो कर रहा है but it's constantly. The rate of uh, the rate of increase in the speed is constant. That's what you can say. The rate of increase in the speed is constant because there is a constant acceleration, or you can also say that there is an increasing speed in this part. हमारे पास रेट ऑफ इंक्रीज इन द स्पीड इज कांस्टेंट का मतलब बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है. इन अदर वर्ड्स सेकेंड पार्ट में उसने कहा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन बाय द ग्राफ इन फिगर 1.2. इसके अंदर जो द स्पीड इज इंक्रीजिंग, द स्पीड is increasing, or we can also say कि यहाँ पर the speed is increasing but in decreasing rate. Decreasing rate क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट्स अगर हम ड्रॉ करें तो टेंजेंट्स ग्रेजुअली जाकर कांस्टेंट लाइक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं. इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़ीरो एक्सेलरेशन हो रही है, तो स्पीड हमारी इंक्रीज ज़रूर हो रही है पर एक डिक्रीजिंग रेट के साथ. यानी कि हमारे पास अगर स्पीड है और ये टाइम है, टाइम 0 था, 5 था, 10 था, 15 था, स्पीड जो थी वो 30 हुई, फिर 40 थी, फिर उसके बाद लेट्स से 45 थी, फिर 47 थी. अब इसमें स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है पर क्या उसके अंदर जो रेट है क्या वो भी इंक्रीज कर रहा है. यानी अब 30 से 40 यानी यहाँ पे +10 हुआ, फिर 40 से 45 यहाँ पे +5 था, फिर +7. जो रेट है यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीजिंग रेट पे थी, डिक्रीजिंग रेट पे थी कि 10, 5, 7 छोटा छोटा हो रहा था वैल्यू. दैट्स व्हाई व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर. On a day with no wind, a large object is dropped from a tall building. एक लार्ज ऑब्जेक्ट था जो कि एक टॉल बिल्डिंग से नीचे गया. द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स फॉल टू द ग्राउंड. State and explain in terms of the force acting how the acceleration of the object varies during its fall. So अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि I'll explain the whole process, what it goes on when you throw something from a large building and there is air resistance that acts on it. So initially what when the object is firstly dropped, जो significant उसका जो जो होता है ना जो force acting हो रही होती है that's its gravity. And then what happens is जो force है उस जो उसको downward force कर रही होती है, pull कर रही होती है, जो कि weight होता है mostly, वो इसको एक कांस्टेंट रेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जा रहा होता है. फिर as the object falls faster, तो air resistance जो होता है that starts acting on it and it eventually increases as well. तो एक जो force जो कि
अपोज कर रही होती है डाउनवर्ड मोशन को और वो अपवर्ड एक्ट कर रही होती है, दैट्स बेसिकली द एयर रेजिस्टेंस। और जैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस हम लोग नीचे जाते जाते हैं हमारी स्पीड फास्ट होती जाती है और एयर रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि वेट तो कांस्टेंट है, वेट तो वही रहेगा, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा एट दैट पॉइंट कि एयर रेजिस्टेंस और वेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। उस केस में क्या होगा, जो हमारे नेट रिजल्टेंट फोर्स है यानी कि एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन या फिर नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारी ज़ीरो हो जाएगी और इस टाइम पे हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज़ नाउ टर्मिनल वेलोसिटी या फ्री फॉल हमारी हो रही है। So that's the majorly process that goes on when there is no wind and then there's air resistance that we are experiencing along with the acceleration of the object वो किस तरह से vary कर रहा है। Acceleration is again net resultant force. So in short what we are going to write is, firstly we are going to write that uh, initially there is, let me write it down for you first. So basically this is it, that initially the major force acting on it is due to the gravity. Starting में सिर्फ gravity है हमारे पास, that is weight, and that is the weight, and then this force will pull the object downward. हमारा object downward चला गया and that will cause it to accelerate at a rate equal to acceleration due to gravity. तो जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है इनिशियली, और फिर जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज कर रही है एज इट फॉल्स फास्टर डाउनवर्ड्स तो एयर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज एज वेल। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक टाइम आता है जिसके अंदर एयर रेजिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट के इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स हमारी ज़ीरो हो जाती है और वी कैन से कि ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो आ जाती है एंड इट कम्स टू द स्टेज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी।